फिर से श्वास लेते हुए सेंटर में आइए एंड श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल कम ऑन सेंटर एंड एक्सहेल राइट। नाउ इनहेल कम ऑन सेंटर, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास प्रश्वास का इनहेल एंड एक्सहेलेशन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। फिर से श्वास लेते वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल राइट। नाउ इनहेल and exhale last time left side, and inhale and exhale last time right side. Now inhale come on center, बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारा एक तरह से कहते हैं पवन मुक्तासन पार्ट 1 स्टेज होता है। इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, कीजिएगा पाद साथ। Now inhale up, सांस को लेते हुए वापस की ओर आएंगे। फिर से वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सहेल लीन फॉरवर्ड एंड ड्रॉप योर palm beside your foot if you are comfortable, otherwise slightly lay down. Now inhale, raise your hands up one more time and exhale, lean forward. प्रयास कीजिएगा। Now start करेंगे पार्वती, इनहेल वन टाइम एंड एक्सहेल फोर्सफुली। ऐसा प्रयास कीजिए आपकी ब्रीदिंग फोर्सफुली, स्टमक आपका अप एंड डाउन हो। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, सेल्फ काउंटिंग 30 स्टॉप एंड 30 के बाद रिलीज एंड रिलैक्स। होल्ड करते हुए राइट ओपन कीजिएगा, एक्सहेल कीजिए। यहीं से परीक्षा भी ली कि आप इतनी जल्दी समाधि में कैसे चले जाते हैं, तो उनका यह अभ्यास था निरंतर जो समाधि की ओर ले गया। ठीक है, अब ध्यान केवल ये जो म्यूजिक बढ़ाए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साउंड को म्यूजिक बढ़ा देंगे। प्रयास कीजिएगा, इसी पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा। आपकी देखो, ईश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है हमारी बॉडी के अंदर, हर चीज़ मौजूद है। आप प्रयास कीजिएगा जहाँ पे आप फीमेल बिंदी लगाते हैं और जहाँ हम टीका लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। कहते हैं कि हमारा ये संचालन करता है हमारी बॉडी को पूरा। कहीं भी कमांड देनी होती है, सबसे पहले आज्ञा चक्र का प्रस्ताव था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए अपनाया गया था। इसके लिए एक जोरदार तालियां। योग के लिए इस वर्ष का विषय है मानवता के लिए योग है। We all know that humanity is very important in our life, because without humanity there is no life. मानवता सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, और हमें इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि हम मानव हैं और मानवता को हम हमेशा बरकरार रखें अपने जीवन में। Respected guests, respected principals and all the faculties of RIE, PSACIB, DMS and all the staffs and the faculties from the invited schools of Bhopal, we greet you from the soil of RIE Shamla Hills. We feel pleasure and happy to greet you and to congratulate each one of you for being the part of this great moment. After paying homage to Maharshi Patanjali, and we are grateful to our Honorable Prime Minister Shri Narendra. हर दिन के लाइफ का दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये योगा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए, ये बताते हुए कि आपकी जिंदगी में योगा का काफी महत्व है और इससे आप अपने हर दिन का हिस्सा बनाइए। 10